Hello students, welcome back to our chapter S block elements, and today in our session we are going to discuss about the diagonal relationship. Now ये diagonal relationship होता क्या है पहले ये understand करते हैं and then we'll proceed further with the actual understanding about the elements who are going to show you diagonal relationship. So अगर notice किया जाए तो this is your periodic table and होता क्या है ना, तो in this periodic table there are certain elements which show properties that are similar to each other. जैसे कि lithium shows properties which are similar to magnesium, beryllium shows properties that are similar to aluminium and so on. अच्छा अब चेक करो, देखो lithium and magnesium are they diagonal to each other? हाँ बिल्कुल. Similarly beryllium and aluminium ये भी diagonal है एक दूसरे से. So therefore this relationship is referred as diagonal relationship. Now a point to understand over here is that diagonal relationship only happens between the second and the third period. Otherwise ये पूरे periodic table में और कहीं नहीं होता. Okay, it only occurs in the second period and the third period. Okay, चलो आगे देखते हैं. So now if we start talking about the diagonal relationship, let's see, the very first that we are going to start off is that diagonal relationship only exists between the second period and the third period. Let me just correct this for you. It's second and third period. अच्छा further, ना diagonal relationship exist होता है, agreed, no problem with that. But why does diagonal relationship actually exist? That is the question right now. Now, diagonal relationship exists because of sizes which are similar or similar ionizing energy or similar polarizing powers or the sizes of atom which are relatable to each other or which are in very close proximity of each other. So because of all these reasons तुम्हारे diagonal relationship exist होते हैं. Let's start off with the very first diagonal relationship that we are going to learn and that is for lithium and magnesium. अच्छा अब ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे कि lithium and magnesium में चेक करो diagonal relationship exist क्यों होता है. तो the very first is due to the similar atomic size. Second one is because of similar polarizing power. Third is because of similar electronegative character. अच्छा similar मतलब how much? Let's see the values also. So over here अगर check करोगे, lithium has an ionic size that is Li+1 of 152 picometers. Magnesium has an ionic size of 160 picometers. But अगर atom की बात की जाए तो the size of atom is 1.7 picometers, whereas for magnesium it is 3.9 picometers. Similarly, अगर electronegativities की बात की जाए, then electronegativity of lithium is 1 and magnesium is 1.2. So check करो, ये जो values है, they are very close to each other and therefore they have properties which are much more similar with respect to each other. ठीक है, चलो कौन कौन से प्रॉपर्टीज सिमिलर है ये भी देख लेते हैं. सो आई हैव लिथियम ऑन वन साइड एंड मैग्नीशियम ऑन अदर. चेक करते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिथियम इज द हार्डेस्ट अमॉन्ग्स ग्रुप 1. सिमिलरली मैग्नीशियम भी हार्डेस्ट है अमॉन्ग्स ग्रुप 2. सो ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम हो गई. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. द नेक्स्ट वन, सो लिथियम can form nitrides. Lithium has a capability to combine with nitrogen. Magnesium also has a capability to combine with nitrogen. Therefore, lithium and magnesium both can form nitrides. Next one, lithium hydroxide is a weak base. Group 1 के जितने भी hydroxides हैं, sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxides, all of them are strong bases. लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस. इसको याद रखना, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस है. सो लिथियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ वीक बेस. देयरफॉर देयर प्रॉपर्टीज वंस अगेन कम्स आउट टू बी सिमिलर. Further, the next property, lithium forms deliquescent salts, even magnesium forms deliquescent salts. Now, a question comes, what exactly do we mean by deliquescent salt? तो चलो ये भी देख लेते हैं. Okay, salt, let's suppose मैंने एक salt लिया and इसको हम लोग ने open air या atmosphere में छोड़ दिया. Now, if this salt is a deliquescent salt, what he would do? He would start absorbing moisture or he would start absorbing water vapor from the air. And ये इतना ज़्यादा moisture absorb कर लेगा that
he would himself get dissolve in that moisture. मतलब होगा क्या कि salt लिया हम लोग ने, पहले वो solid था, थोड़ी देर के बाद it has turned into a liquid और it has turned into an aqueous solution. क्यों? Because उसने इतना water vapor absorb कर लिया है that वो उसी water vapor में dissolve हो गया है. And such salts are referred as deliquescent salts. So a salt which absorbs moisture very strongly or in large amounts, we could say, let's write down this over here, in large amounts and gets dissolved in it are referred as deliquescent salts. Further, चलो आगे देखते हैं next point. In lithium carbonate, it decomposes. Similarly, magnesium carbonate also decomposes. Further, next one, lithium hydrogen carbonate, that is LiHCO3, is liquid in nature. Similarly, magnesium hydrogen carbonate is also liquid in nature. So ये देखो वापस दोनों properties same निकली, and therefore what you would say कि lithium and magnesium की the most of the properties are same. तो ये तो हो गई lithium and magnesium की बात. चलो आगे देखते हैं beryllium and aluminium के बारे में. Now if you talk about beryllium and aluminium, let's see, they have same polarizing power. Next, Be2 plus has a ionic radius of 31 picometers, whereas aluminium 3 plus has an ionic radius of 53.5 picometers. Further, अगर charge to mass ratio देखा जाए इन दोनों के लिए, तो for beryllium it is 0.064, for aluminium it is 0.060. Now over here ध्यान रखना, atomic size same नहीं है, या मैं बोल सकता हूँ that atomic size has slight amount of difference and that difference is a considerable difference. Okay, so still beryllium and magnesium. Now over here understand, एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा सेम नहीं है, एटॉमिक साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एंड दिस डिफरेंस इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस. सो ओवर हियर फॉर बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, प्लीज रिमेंबर द मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सेम बिकॉज ऑफ अ वेरी डोमिनेंट रीजन, एंड दैट डोमिनेंट रीजन इज दैट दे बोथ हैव चार्ज टू मास रेशियो which is almost the same. बेरिलियम के लिए था 0.064, एल्यूमिनियम के लिए है 0.06. So it's almost the same, and it's because of this dominating factor or this dominating reason they both shows properties similar to each other. ठीक है, यहाँ पे खास ध्यान रखना, एटॉमिक साइज डेफिनेटली इट हैज अ रोल टू प्ले बट नॉट अ डोमिनेंट रोल. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. लेट्स सी व्हाट आर प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम. फर्स्ट पॉइंट, both of them form covalent bonds. Now how exactly they form covalent bonds, we'll see it later, don't worry. Okay, next, so both of them don't get readily attacked by an acid. Now what do you mean by this? देखना, अगर let's suppose मेरे पास एल्यूमिनियम का रॉड है, या let's suppose I have a block of aluminium and this block of aluminium is dipped into HCl. Okay, तो होगा क्या? So aluminium and hydrochloric acid, they would start reacting with each other definitely, and what you would get a compound that is Al plus HCl giving me AlCl3, which is aluminium chloride, and definitely hydrogen would be liberated, but we are not concerned about that right now. Now होता क्या है, this AlCl3 it gets stuck to the metal block. Now देखो ये होता कैसे है. Let's imagine this is your aluminium block. Now this aluminium block starts reacting with HCl. Now what has happened? It is getting converted into AlCl3. But ये जो AlCl3 बना है, it forms a very thick layer over the aluminium block itself, and thus it doesn't allow the aluminium beneath the AlCl3 layer to react. Therefore होता क्या है, एल्यूमिनियम थोड़ी देर के लिए रिएक्ट करेगा HCl के साथ, बट उसके बाद इट वुड स्टॉप द रिएक्शन. दिस कुड ऑल्सो बी आस्क्ड एज एन गिव रीजन व्हाई एल्यूमिनियम कुड नॉट बी यूज्ड एज अ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, एंड सिमिलरली बेरिलियम भी नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज बेरिलियम के साथ भी यही होता है. BeCl2 जो बनेगा, इट वुड फॉर्म अ थिक लेयर ओवर द बेरिलियम ब्लॉक और ओवर द बेरिलियम क्यूब, and this BeCl2 will not allow
the further HCl reaction with beryllium and therefore the reaction would stop. अच्छा, इस process को एक और नाम है, this process is also referred as anodization. Okay, but then please remember anodization is specifically used only in the case of aluminium and not in the case of beryllium. So you can just write down over here that they both don't get attacked by acid easily or do not liberate हाइड्रोजन. एंड वो लिबरेट क्यों नहीं करते? तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो लिबरेट नहीं करते, दे विल लिबरेट, बट एज वी सेड ओवर हियर, चेक करना, दे वुड लिबरेट इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड उतने स्मॉल अमाउंट में हमें कोई फायदा नहीं है उस हाइड्रोजन को लेके, राइट? वी कैन सेल इट और इवन इफ वी आर एबल टू सेल इट देन द यील्ड वोंट बी सब्सटैंशियल एंड देयरफॉर इट वुड लीड टू लॉसेस. तो हम लोग इसको प्रेफर नहीं करेंगे. ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन. नाउ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली. But then, if beryllium hydroxide is further reacted with a strong alkali, it gives you a compound BeOH 4 times with a total charge of -2. अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना यहाँ पे बेरिलियम OH के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहा है? So beryllium and OH, the total number of bonds are 4 bonds. Please remember this, and we will use this somewhere else. Okay. Further, अगर बात की जाए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, बट डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक NaOH और KOH. ठीक है, तो अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किया जाए अल्कली के साथ, देन व्हाट यू वुड गेट? देन यू वुड अगेन गेट एन अल्कलाइन सॉल्यूशन. Then you would again get a complex ion which is AlOH 4 times with a total charge of -1 over here. Now ध्यान में रखने वाली बात, इन कंपाउंड्स को याद कैसे रखोगे? तो देखो काफी सिंपल है. लेट बेरिलियम बी X, सो इन BeOH 4 times, ओके, -2. नाउ हाउ वुड यू रिमेंबर कि कितना चार्ज आना चाहिए? चेक करो. लेट बेरिलियम बी X, ओके, सो X प्लस एक OH is -1, so 4 OHs would be -4, है ना? So X plus -4 should be equal to -2, and therefore what we can say, X is equal to, check करो, it's equal to +2. so तुम्हें ऐसे नंबर सिलेक्ट करना है ताकि बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +2 ही रहे, but then it has to combine with few other elements or few other molecules. But then he has to combine with few other elements or few other molecules. Why? Because if you talk about beryllium, yeah, BeCl2. Okay, let me just write it over here. If you talk about BeCl2, that is beryllium making bonds with 2 chlorine atoms. Now over here check करना, beryllium is making only 2 bonds and सिर्फ 2 bonds मतलब सिर्फ 4 electrons. Therefore beryllium is short of electrons. He has not completed his octet yet, and because he has not completed his octet yet, what he needs to do is he needs to accept electrons, and therefore what we could also say over here, beryllium will definitely act like a Lewis acid. Why Lewis acid? Because any person who accepts electron would be referred as Lewis acid. Please remember, हम लोग ने ऐसा याद भी रखा है इसको, A से accept, A से acid. So a person who accepts electron will be nothing but a Lewis acid. Okay, चलो let's move on with the next point. Okay, before that we'll just erase this out ताकि अपने पास थोड़ा सा जगह बन जाए. Okay, so let's talk about the next point. The next point says hydrolysis of both lithium carbide and aluminium carbide gives you a product which is a hydrocarbon, and that hydrocarbon is methane. ठीक है. Further, the next point reads that AlCl3 and BeCl2 both can act like Lewis acids. Now what do you mean by this? Both can act like a Lewis acid. तो हम लोग ने अभी देखा beryllium, when BeCl2 is formed, it is making only 2 bonds. Therefore, he is electron deficient, and thus he would accept electrons. AlCl3, aluminium ने 3 bonds बनाए क्लोरीन के साथ. Now 3 bonds is equal to 6 electrons, and because he requires 8 electrons also, what he would do,
he would definitely gain electrons. So जैसे एल्यूमिनियम एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, वैसे ही बेरिलियम भी एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, and because of this their properties once again comes out to be similar. Okay, further the next one, beryllium oxide or beryllium hydroxide and aluminium oxide and aluminium hydroxide both are amphoteric in nature. Now what do you mean by amphoteric? Amphoteric is a commodity or a species that could act like acid or a base. So it has capabilities of acting like both. It can act like an acid or it can act like a base. अगर तुमने एक strong acid डाला है तो वो एक base की तरह act करेगा, अगर तुमने एक strong base डाला है तो वो एक acid की तरह act करेगा. ठीक है, चलो next one is both can form highly fluorinated compounds, and those fluorinated compounds could be BeF4 and AlF6. BeF4 again फ्लोरीन इज नेगेटिव, सो दिस वुड बी -4. सो तुम्हें ऊपर वाला चार्ज इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +2 रहे, एंड देयरफॉर इट्स BeF4 with 2 negative, it's AlF6 with 3 negative. And if you remember anomalous properties of beryllium, हम लोग ने बोला था beryllium can form only 4 coordinate bonds. तो चेक करो यार, यहाँ पे ये जो कंपाउंड था BeOH4 टाइम्स, इसमें बेरिलियम ने 4 बॉन्ड्स बनाए, यहाँ पे भी BeF4 बेरिलियम कितने बॉन्ड्स बना रहा है? सो इवन हियर ही इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स. सो याद रखना हर बार द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच बेरिलियम कुड मेक इज मैक्सिमम 4. बाकी के एलिमेंट्स जैसे तुम्हारा हो गया कैल्शियम मैग्नीशियम ऑफ ग्रुप 2, एल्यूमिनियम हो गया ऑफ नेक्स्ट ग्रुप 13, दे कुड हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6. So the total bonds or the total number of bonds can be made which could be 6 in number. Okay, चलो let's move on with the last reaction. हम लोग ने बोला था ना lithium carbide and aluminium carbide, तो चलो वो reaction देख लेते हैं. So if you have beryllium carbide which is Be2C when treated with water, and याद रखना over here you need to warm this water. ठीक है, so when it is treated with warm water, what you would get? We'll get beryllium hydroxide BOH twice plus CH4 which is methane. Similarly, अगर aluminium carbide को heat किया जाए with again warm water, what you would get? You would get AlOH thrice which is aluminium hydroxide, and once again हमें methane मिल जाएगा. So these were the properties that are similar for lithium and magnesium and beryllium and aluminium. ओके, इन प्रॉपर्टीज के बारे में खास ध्यान रखना बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम. दैट इज गिव द एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम और एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, or they might ask you give the diagonal relationship between lithium and magnesium and beryllium and aluminium. So that's all for this module, students. We'll meet up in the next module. Till then, thank you and happy learning.